Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna organize this wardrobe. Yes, even my wardrobe can turn like this. I am lazy time to time, but not anymore. So today I took courage and I'm gonna organize this. So let's get started. Abracadabra! Okay, it was not that easy, but let's see the process. So I started this process by taking out all the clothes and empty out the wardrobe. क्योंकि ऐसा करने से आपको पता चलेगा कौन से कपड़े आपको स्टोरेज में रखने हैं एंड कौन से आप यूज़ करने वाले हैं और कौन से डोनेट करने वाले हैं. एंड बिलीव मी, जब आपके सामने सारे कपड़े आ जाते हैं ना, यू नो, मे बी मेक अ पाइल ऑन द बेड और ऑन द फ्लोर, आपको लगता है कि ओ एम गॉड, OMG, आपके पास इतने कपड़े हैं और इसमें से आधे कपड़े तो ऐसे होंगे जो आपने ना ही इस सीज़न पहने हैं ना ही पिछले सीज़न पहने हैं. सो वाई नॉट जस्ट स्टोर देम और वाई नॉट जस्ट गिव देम अवे. क्योंकि मैंने जितने भी कपड़े धोए समर्स के, आई स्टार्टेड स्टोरिंग देम. सो बट अभी भी दैट यू कैन सी इन दैट ब्लू बास्केट, इसमें अभी भी बहुत सारे कपड़े थे समर्स के. और कितने सारे कपड़े तो यू जस्ट कीप ऑन पैकिंग एंड नेवर यूज़ दैम. क्योंकि इसमें बहुत सारे, अभी भी इसमें 3-4 ड्रेसेस थी एथनिक जो मैंने कभी नहीं पहनी. सो आई थॉट वाई नॉट जस्ट स्टोर दैम. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट्स एम्प्टी एंड इट्स लुकिंग सो बिग. So now I'm starting to fold all the clothes that is going in the storage or going for donation or directly going to the wardrobe. This way I make piles, different piles, and categorize them. I'm using these organizers. मैंने Amazon से खरीदे थे. I organize my undergarments, scarves, socks in these organizers. फर्स्ट, एक तो ईज़िली आप पिकअप कर सकते हो आपको जो भी पहनना है, क्योंकि आप देख सकते हो इन छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो इनमें क्या है. दूसरा, इट मेक्स योर अलमीरा लुक ऑर्गेनाइज्ड. So now it's time to put everything back. I am hanging those clothes. Those are outer wears that I'm supposed to wear when I'm going out, because often what happens, I mean I'm sure it happens with you as well, कि हम कहीं भी जाते हैं, हम हमेशा कहीं जाना होता है, रेडी होना होता है. एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर. क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू फोल्ड ऑल द क्लोथ्स, राइट. और जब टाइम आता है कहीं जाने का, सो यू कांट सी मच, या आपको वही कपड़े दिखेंगे जो आपने पहले से ही पहने हैं, या आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हो. सो दिस टाइम व्हाट आई डिड, आई जस्ट hanged all the clothes that are supposed to, that I'm supposed to go out and wear them. So this way at least I can see, at least मेरे पास 5 स्वेटर्स हैं या 5 जैकेट्स हैं, तो मुझे यही पहननी है और इसके साथ मैं क्या कलर कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ. So I guess it's gonna work for me this time. Yay! So at last my wardrobe is organized. I'm just gonna clean up this room and we're done. So tell me in comments, did you like this transformation? I mean, I am totally impressed by myself. It's really, really soothing to my eyes. At least now I know which thing is where. My bags are on the display, my outerwear is hanging, and some are in that blue box. My loungewear, the कपड़े जो मैं घर पे पहनती हूँ, I can actually see कि कौन से कपड़े कहाँ हैं. It's actually really very satisfying. So that's it for today. I hope you liked this video. If you loved it, do subscribe to my channel. If you like it, please leave a like. And if you have any comments, do leave in the comment section. And I'll be coming back with more such videos. Till then, bye bye, butterfly.